Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gargey and today I came up with a video of recommendations. As we all know, NYKAA Summer Super Saver Days की सेल चल रही है, तो I thought to recommend you some good products that I have been using since a while, जो कि मुझे पता है कि वो अच्छे हैं, तो मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने वाली हूँ. एंड इफ़ यू वांट टू बाय तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को टैप करके यू कैन बाय दोज लिंक्स. दोज आर नॉट एफिलिएट लिंक्स, सो yes, I am just providing the information. And yes, without a further ado, let's get started with the video. So our first product is of a body care and I have been using it since 2 years. एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कितना पसंद है. Skin care and body care is must, so I'm sharing this Vaseline Aloe Vera Hydration Aloe Fresh Intensive Care Moisturizer. This is very soothing when you apply it on your hands or your legs in summer especially. बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है एंड क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि ये स्टिकी होगा या कुछ भी होगा. तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ये देखो. And now comes the turn of the most important thing that every girl, boy, everyone should own in summer especially, also in winters. So it's the sunscreen, Jove's sunscreen with SPF 40. It's paraben free, waterproof, UVB protection. It's very nice and it costed me around 250 I guess. अगर मुझे मिलेंगे स्क्रीनशॉट सेल से, कोई सेल इन पे लगी होगी तो आई विल प्रोवाइड दी स्क्रीनशॉट्स हेयर. सो जोव्स क्रीम आई हैव यूज्ड, मैंने अभी कुछ दिन पहले बाय करी है, तो ये बहुत अच्छी है. डज नॉट लीव वाइट कास्ट एट ऑल. You can see this. This sunscreen is for normal to dry skin people. If you are a person with oily skin or combination skin, I am having combination skin, so मैं इसको बहुत कम quantity में use करती हूँ. And so you can also do this. Now it's the turn for makeup, the thing we have been waiting since the body care or skin care was going on. तो हम सबसे पहले चलेंगे फाउंडेशन की तरफ. I love this foundation, Maybelline's Fit Me One foundation. सबको पता है it's the best foundation in the drugstore category and the affordable category. It is for normal to oily skin with SPF 22. My shade is Ivory 115. Now I have 3 categories, or you can say I have 3 options for setting that foundation. You can see the compact powder or loose powder. आपकी जैसी स्किन टोन है, स्किन टाइप है, आप उसकी तरह से अपना कॉम्पैक्ट और पाउडर चूज़ कर सकते हैं. Our first option for the compact powder is from the brand Lakme. It's their Lakme Radiance Compact Edition. I am in the shade Natural Pearl. ये मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है. ये एक्चुअली मेरी मम्मी ही बाय करती है, मैं भी लगा लेती हूँ क्योंकि इसका शेड मेरे लिए भी बहुत सूट करता है. एंड इट कम्स विद अ मिरर एंड माई शेड इज़ दिस. आपको ये थोड़ी सी कवरेज भी प्रोवाइड कर देता है, एज यू कैन सी. बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है. नेक्स्ट आवर सेकेंड ऑप्शन फॉर द कॉम्पैक्ट इज दिस Maybelline's Fit Me Compact Powder. I am in the shade Ivory, but I use this compact to settle the whiteness on my face. जब मेरा फाउंडेशन ओवर लग गया होता है या थोड़ा सा वाइट दिख रहा होता है, तो I use this foundation. Next up, for the oily skin people, I also have an option. जिनकी oily skin है and they want to set their foundation or concealer with a loose powder, I have this Mars Blue Strength Setting Powder in the shade Translucent. This is the powder and this is the best affordable loose powder I came through. Mars is achieving a good reputation in their products. I love their products and ये translucent है, like you can see. बहुत सॉफ्ट है. इट प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट illuminating effect under your eyes or anywhere you apply, but not those big chunky glitter particles. Next up, I have blush category. I have this My Glam Instaglam Pop XO Edition Face Kit. It includes
a setting powder, which is a translucent setting powder, a coral blush, a peachish orangish blush, and this golden highlighter which will complement the dusky skin tone or deep skin tone very beautifully. Like ये वाला highlighter does not suits me बिकॉज थोड़ी सी फेयर स्किन टोन है, तो ये इतना गोल्डन सा हाइलाइटर नहीं अच्छा लगता क्योंकि इसमें ब्रॉन्जी इफेक्ट है. बट दी blushes are awesome. They are very pigmented. Translucent powder does not have any pigmentation, तो इसमें जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है इसमें भी कोई ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, एज यू कैन सी. तो ये बहुत अच्छा पैलेट है. यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पैलेट. नाउ कम्स द टर्न ऑफ eyes. I don't have any eyeshadow palette, but you can use that blush palette, the My Glam one, as your eyeshadow because उसमें coral color भी है, pink color भी है, and you can apply that golden highlighter as a shimmer color. So for the eyes, I have this mascara from Maybelline New York Colossal Kajal, waterproof mascara and very black. जेट ब्लैक है, वाटरप्रूफ है, सो आपको एक ऑयल इन्फ्यूज्ड माइसेलर वाटर की हेल्प से ही इसको रिमूव करना चाहिए. कमिंग ऑन टू द काजल एंड आई लाइनर्स, आई हैव दीज टू ऑप्शंस. वन इज़ फ्रॉम मेबलिन एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ लैक्मे. First we will go with the Lakme one because it's a kajal. It's a blue kajal, very great pigmentation. मैंने अभी अपनी आँखों का जो मेकअप है वो इसी से किया है, तो इसकी पिगमेंटेशन कुछ ऐसी है. How beautiful is this color? It's amazing. You can invest in this. ये बहुत ज़्यादा चलता है. Now comes the turn for the eyeliner. I have this Maybelline Colossal Black eyeliner. It's a jet black eyeliner. Very great. Next up for the lips, I have three options. Two dark options and one nude option, and we'll start with the nude, of course. I have this Swiss Beauty matte lip liquid lipstick in the shade Real Nude, double 2 Real Nude. This is my favorite lip shade. ये इसका शेड है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, समर्स में बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है फेयर स्किन टोन एंड ऑल्सो मीडियम स्किन टोन इफ अप्लाइड विद द डार्क lip line. Next up for the wedding season, summer wedding season lipstick, I have this My Glam Lit lipstick in the shade I Am Baby. I have done a complete review video of these My Glam lipsticks, so you can check this in the I button wherever I will put it. Last but not the least option, I have this lipstick from Swiss Beauty again. This is a kind of purple violet kind of a shade. It's Purple Willem 35. बहुत प्यारा कलर है. My God, it's a plum shade. Very beautiful. Matte. It's this lipstick is matte. You can see this one is the shade. Now we came to the end of this video. I hope you liked this video. If you did, please subscribe to my channel and like this video. Comment down your favorite product of this video, and I will see you next time very soon. Bye bye.